Your future is created by what you do today, not tomorrow. हम जो आज करेंगे हमारा कल उस पे निर्भर करता है। तो आज हम उस चीज के बारे में बात करेंगे जो हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट इज टाइम। समय समय किसी के लिए ना रुका है ना रुकेगा। तो जो आज है उस चीज का हम फायदा क्यों नहीं उठा लेते, इस समय को हम यूटिलाइज क्यों नहीं कर लेते अच्छे समय के लिए या अच्छे के लिए। तो आज मैं आपको वैसी ही चीजें बताऊंगी जिससे आप अपने लाइफ में टाइम का यूसेज एक प्रोडक्टिव वे में कर सकते हैं। सो टाइम मैनेजमेंट इज द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। और उससे रिलेटेड जितनी भी टिप्स हैं, जितने भी स्टेप्स हैं जो लाइफ में आप ले सकते हो, फॉलो कर सकते हो, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आप अपनी प्रायोरिटी समझ पाए, आपको अपने टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करना है अपनी लाइफ में, उस चीज को आप समझ पाए। नहीं तो आधी वीडियो देख के आपको कुछ नहीं समझ आएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं कि जब हम अपने समय का सही से उपयोग करते हैं तो हमारे लाइफ में किन किन चीजों का फायदा होता है। सबसे पहला फायदा ये होता है कि आपकी जिंदगी से स्ट्रेस नाम की चीज हट जाती है, क्योंकि जब आप चीजें सही समय पे कर रहे हैं तो आपको उस चीज का दिमाग में बर्डन नहीं है कि अरे ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अरे इस चीज का टेंशन, मुझे ये सबमिट करना था। वो चीज जो स्ट्रेस देती है ना, पेंडेंसी, डिलेइंग ऑफ टास्क, वो बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है। और ये मैं सिर्फ कॉर्पोरेट वालों से बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं घर में जो हाउसवाइफ भी है, जो सामान का लिस्ट बन रहा है, आज नहीं कल हम ले आएंगे, कल हम कर लेंगे, आज ये थोड़ा काम है घर का, कल कर लेते हैं। तो वो जब आप डिले करे जा रहे हो तो यू आर मेकिंग योर सेल्फ बर्डन विद द टास्क विच इज नॉट बीन कंप्लीटेड बाय यू ऑन टाइम। तो टाइम का यूटिलाइजेशन सही सही तरीके से इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब आप टाइम को सही तरीके से यूज करते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट होता है दैट स्ट्रेस गोज अवे। दूसरा होता है मोर टाइम। जब हम चीजों को टाइम पे करना शुरू कर देते हैं तो हमारे पास और समय बच जाता है बाकी चीजें, विच लीड्स टू मोर अपॉर्चुनिटीज। जब हमारे पास समय है बाकी चीजें करने के लिए और बाकी चीजों पे ध्यान देने के लिए, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी तब कि अरे हम ये भी स्कोप है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इजिली मेंटेनिंग योर वर्क लाइफ बैलेंस, देयर इज अ टाइम लेफ्ट टू अपग्रेड योर सेल्फ इन सम skills classes where you can enhance your skills, where you can upgrade your skills. या तो टाइम बचता है ना कि हम कुछ एक्स्ट्रा सीख लें, कुकिंग क्लासेस ले लिया हमने। सो व्हेन यू डू थिंग्स ऑन टाइम यू आर गिविंग योरसेल्फ मोर टाइम एंड मोर अपॉर्चुनिटीज। तो अब बात करते हैं जब हम चीजें समय पे नहीं करते हैं तो उसका क्या असर होता है। सबसे पहला होता है कि आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। दूसरा होता है कि आपके पास किसी चीज का समय नहीं है, आप बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हो कि ये करूं वो करूं, देयर इज नो सम ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डूइंग एनी टास्क और आप कंफ्यूजन में मिस्टेक्स करते हो। दैट लीड्स टू पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क विच यू आर डूइंग इन योर ऑफिस और एट होम। जब आप चीजें मैनेज नहीं कर पाए, आपने ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजें नहीं की, तो आप पैनिक मोड में चले जाते हो, अरे ये गड़बड़ हो गया, फिर वो गड़बड़ हो गया। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप कॉर्पोरेट के एक एम्प्लॉय हो या आप एक हाउसवाइफ। ब्रिंगिंग एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट लाइफस्टाइल, एंड दैट लाइफस्टाइल would lead you to a proper distress and you can say a relaxed environment. And when you are relaxed, you have more time, more opportunities, more space to look after what else you can do in your life to grow more. तो टाइम मैनेजमेंट का सबके लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल होता है। टू
make them grow, to make them exceed in their life, to make them an organized person, to make a person very clear about his goals, and the one who can look upon more time and more opportunities around him or her. So let's continue with the tips and strategies or the action steps you can take up while you are managing your work at your offices or at home. First tip for the time management is to set goals correctly. That means that you have to look upon the goals which can be accurately and in a timely manner be measurable as well as achievable. Something which is realistic in nature and can be achieved. So I would suggest you to set SMART goals. I have already talked about this type of goal in my previous videos. Link will be given in the description, so you can go and watch that in detail what exactly the SMART goals are. And to summarize over here, SMART goals are something which is specific, measurable, attainable, relevant and time bounded. Okay, so set SMART goals to achieve the time management in your life. Second tip is to prioritize your work. Prioritizing your work means that whatever task has been assigned to you or whatever task you have in front of you, set a priority for each task. So tasks can be prioritized on the basis of 4 heads. First, the task can be important as well as urgent. So that is P1, priority 1. सो अब प्रायोरिटी 1 टास्क के साथ हमें क्या करना है, उसी समय उस टास्क को कंप्लीट करना है. Then comes the P2, priority 2. These kind of tasks are important but not urgent. So you can take some time to decide how you want to do this and how much time you want to take to do this task. Then comes the task P3, priority 3. The task which is not important but urgent. Okay, so you can delegate these tasks to some other person. It is not important कि वो काम आप खुद करो, आप किसी और को भी दे सकते हो वो करने. And the last priority tasks are which are not important or not urgent. Okay, so these tasks should not be done on a priority basis. It should be treated as least priority task and इसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए. Like it can be ignored sometimes. Okay, keep aside when first complete the P3 tasks, then come to the P4. Next is set a time limit. When you set a time limit, the open time and the completion time for any task, you are time bounded and you are supposed to finish your task under that time. तो इससे क्या फायदा होता है, जब आप टाइम बाउंडेड हो जाते हो, दैट दिस मच टाइम यू विल गिव टू particular task to complete, that helps you in recognizing that when the task will be completed और इसमें क्या क्या options हैं, आप अपने आप को better बना सकते हो to perform that task. Okay. Next tip is to take breaks between each task you're performing. जब हम बीच में ब्रेक लेते हैं तो उससे हमारा डेडिकेशन, मोटिवेशन, कंसंट्रेशन सब बना रहता है एक टास्क में. अगर हम कंटिन्यूसली काम करते रहेंगे तो हम थक जाएंगे, स्ट्रेस्ड हो जाएंगे, विल नॉट बी मोर रिलैक्स्ड, एंड व्हेन वी टेक ब्रेक वी फील मोर रिलैक्स्ड एंड वी कैन कंटिन्यू वर्किंग विद द सेम मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड कंसंट्रेशन. Next tip is organize yourself. So that means when there are tasks assigned to you, then you have to handle each task with a different timeline. Okay, and when you are doing that, you have to maintain some calendars, you have to maintain a diary, and for each task there are meetings required. या घर पे कुछ इवेंट है, शादी है, फंक्शन है, अब हर फंक्शन को कैसे हम लोग
ऑर्गेनाइज वे में कर सकते हैं. सो देयर अ मीटिंग रिक्वायर्ड विद द फैमिली मेंबर्स, एंड फॉर कंप्लीटिंग दैट टास्क वी नीड टू ऑर्गेनाइज एवरी फंक्शन इन अ वे दैट देयर विल बी अ टाइम लिमिट. इतने से इतने बजे ये होगा, इतने से इतने बजे. सो वी नीड टू प्लान आउट द वे for doing our tasks. Next step is to remove the non-essential tasks or activities from your list. जो काम जरूरी नहीं है और आपका वक्त नहीं रिक्वायर्ड है उस काम में, आप उस काम को हटा दो अपने लिस्ट से. ओके. नेक्स्ट स्टेप इज, एंड द लास्ट इज, प्लान अहेड. Whenever you are planning or organizing some task to be done, just give that task 2 days extra time to be completed. Okay, because sometimes there's something else urgent would come up in between, and that's so urgent and important and has to be treated as T1. So always keep extra time for every task. Keep an extra time for every task you have. Okay, wrap up. Time is very important. Time is everything. समय को बर्बाद ना करें, समय को अच्छे से यूज करें, ताकि आज अगर आप मेहनत कर रहे हो तो उसका फल आपको जरूर कल मिलेगा, बिकॉज यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम एंड नॉट वेस्टिंग इट. ओके. एंड सबसे अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट राइट नाउ फॉर यू इज टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो. और आपको सॉफ्ट स्किल्स के बारे में और भी जानना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, एनहांस करना है, सो यू कैन विजिट माई अदर वीडियोज ऑन माई चैनल and take care, learn more, explore more, grow more. Thank you.